ओके, आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन गो अहेड विद द सेशन, ओके? लेट मी जस्ट, just put a message in the group that we have started. Okay. I hope you all have, pen and a paper with you or any journal or notebook with you. I would want you to have that. अगर आपके पास नहीं है तो please go and bring it. Any pen, paper. So whenever you come for the session of Magical Vortex, एक pen, paper साथ में रखा ही करिए, ठीक है? जर्नल वगैरह. So if it is there with you, just give me a thumbs up. If it's not, please bring it. ठीक है? तो एज आई वाज मेंशनिंग कि ये सेशन हमें कल लेना था, बट इट पोस्टपोन्डेड बिकॉज आई हैड अ हेडेक। मुझे लगता है कि यूनिवर्स ऑलवेज हैज द इट्स ओन वेज। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपके हाथ में है और क्या आपके हाथ में नहीं है। व्हेन समटाइम्स विच इज समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल, देन यू नीड टू सरेंडर। ओके, so that is what I did. I thought of pushing myself and taking the session, then it was beyond my physical capacity, so I just surrendered. And when I surrendered, I could see today why it has been postponed. Okay, so हमेशा सिचुएशन से लड़ना जरूरी नहीं होता है। Sometimes when the situation is out of control, out of your hand and beyond your efforts, then you should just surrender and believe in the universe. It knows the way. Okay, when we go beyond it and when we push it, जब हम ज्यादा पुश करते हैं और beyond जाते हैं उसके, तो दिक्कतें होती हैं। ओके, सो टुडे इज दैट एग्जाम्पल कि आज राधा अष्टमी के दिन हम मिले, बिकॉज 2 days बैक ओनली आई अनाउंस्ड माय गॉडेस एम्बॉडीमेंट मेडिटेशन प्रोग्राम दैट आई वुड बी टेकिंग ड्यूरिंग नवरात्रि के 9 नवरात्रि के दिन में 9 मेडिटेशन होंगे जो दुर्गा के डिफरेंट रूप के डिफरेंट एम्बॉडीमेंट होंगे, विच विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट लेटिंग गो, forgiveness, and which will help you to embody the power within. Okay, so there would be different हर देवी के डिफरेंट रूप, और उस रूप से आप क्या सीखते हैं, आप कैसे एम्बॉडी कर सकते हैं उस रूप को, दैट वुड बी द मेडिटेशन विल बी ऑल अबाउट. So during Navratri, the goddess, the energy is very powerful, and the energy, the cosmic movements are such कि आप उसमें मेडिटेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, ऑब्वियसली. एंड स्पेशली इफ यू आर, अगर आप प्रेग्नेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं तो. ओके, so coming back to the this day today, when I announced, 9/9 ko, 9/9, that was 2 days back, I think. Huh, today's 11th, so it was on 9th. 9/9 ko, it just suddenly, the download came that I need to do this Navratri 9 days meditation. So 9/9 ko 9 days ka meditation ka download आया, and I just announced it. Okay, announced it. और उसके बाद कल का सेशन पोस्टपोन्ड होके आज के सेशन पे आया था. आई स्वेयर दैट वाज नो प्लान्स, एवरीथिंग वाज वेरी स्पॉन्टेनियस. आई जस्ट चोज टू फ्लो विद द फ्लो. सो आई थिंक कि क्योंकि हमें गॉडेस वाली एनर्जी में ही जाना था, सो टॉकिंग अबाउट मस्कुलिन एंड फेमिनिन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. तो आज का दिन आई वुड बी टॉकिंग अबाउट masculine and feminine energies in context with Radha. Okay, so what I want you to know, कि even if you are not into, you are not religious, or you are not, even if you are not spiritual also, then also, take a look at Radha. है ना? आई होप आप सब लोग राधा को, रानी को तो जानते ही हैं ना, कृष्ण की दुलारी, इट्स राधा रानी. तो अगर आप ये देखें कि राधा, अगर आप राधा के बारे में सोचते हैं, what comes in your mind? So the first question that I want to throw it to you and put it forward and across to you is, what is Radha according to you? Okay? Or for you. आप अगर राधा का नाम आपके सामने आता है तो आपके लिए राधा क्या है? राधा की क्या क्वालिटीज है, या राधा को क्या समझते हैं आप? ओके, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन. व्हाई, दैट विल ऑल्सो फॉलो. ओके, उसको भी आगे फॉलो करेंगे, लेकिन पहले व्हाट इज राधा फॉर यू? आपके लिए राधा क्या है? ठीक है, सो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. वॉट एवर दैट कम्स इन योर माइंड, इफ आई टेल यू व्हाट इज निकी फॉर यू, सो निकी की वो क्वालिटीज आपके सामने आएगी. दैट इज व्हाट इज राधा फॉर यू. Okay, I would also appreciate if you write it in the chat box so that we can carry it forward also. Okay,
अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो और भी अच्छा है, हम डिस्कशन और अच्छे से कर पाएंगे. So for me, Radha, if I think of Radha, yes, I think of Radha, it is unconditional love. It's love, it's compassion, it's devotion. Okay, it's devotion, it's compassion, it's love, it's uh, nurturing energy, it's kindness, it's a flow, it's playfulness. Is Radha for me. So whatever Radha is for you, जो भी राधा आपके लिए है, now after you write down कि ये राधा है मेरे लिए, follow it with the next question. Okay, so the next question is, how can you embody these traits of Radha in your life? आप इसको कैसे एम्बॉडी करेंगे? एम्बॉडी मतलब आप अपने शरीर में, अपनी लाइफ में कैसे उसको उतारेंगे कि आप भी उसी का एक्सटेंशन हो जाए. ठीक है. सो फॉर मी, इफ राधा इज लव, सो हाउ कैन आई एम्बॉडी लव इन माई लाइफ? मैं अपनी लाइफ में लव को कैसे एम्बॉडी करती हूँ? If Radha is kindness for me, how will I embody kindness in my life? कि मैं वो दयालुता अपनी जिंदगी में कैसे उतारूंगी कि मैं उस काइंडनेस, जो सोर्स एनर्जी है, सोर्स एनर्जी कौन है? राधा. ओके, द डिवाइन एनर्जी कौन है? राधा. और वो क्या है? वो काइंडनेस है, वो लव है. तो उस लव के सोर्स का एक्सटेंशन अगर मुझे बनना है, एक्सप्रेशन मुझे बनना है, so what will I do in my life? Okay, so ponder, thought, think over it. आप सोच के बताइए मुझे, व्हाट इज राधा फॉर यू? आप अपनी जिंदगी में वो चीज कैसे लाएंगे? द आंसर दैट यू गिव विल एक्चुअली हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स. आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सरलता से, आराम से आप उस रास्ते पे जा रहे हैं. ठीक है. सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड डू इट, एंड टेल मी इन द कमेंट्स. ओके. सो एज यू राइट, let me take this opportunity and talk to you about masculine energy and feminine energy. ठीक है. हर इंसान में, हर ह्यूमन बीइंग में देयर आर टू पोलर्स, दैट इज masculine एनर्जी एंड feminine एनर्जी. ठीक है, दोनों ही होती है. दोनों में, आदमियों में भी masculine एनर्जी होती है और feminine एनर्जी भी होती है, औरतों में भी masculine एंड feminine एनर्जी. ओके. बट इन विमेन, फेमिनिन एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स. वो ड्राइविंग सीट लेती है. ओके, इट इज ड्राइविंग योर लाइफ. वेयर इन मेल्स, इट इज मस्कुलिन विच इज द ड्राइविंग फोर्स. ओके, समझ आ रहा है? कीप गिविंग मी थम्स अप सो आई नो दैट यू आर फ्लोइंग विथ मी. ओके. अब इम्बैलेंस कब आता है? बिकॉज हम, we are moving to this Kalyug, we are moving to this fast paced life where women have taken somewhere a role of a man. you know Even they do, even if it is not willingly, it is sometimes unwillingly, they are pushed to the masculine driving seat where the masculine is driving their life. you know how do you know that? when there is an imbalance, जब masculine, औरत में masculine ड्राइवर बन जाता है तो imbalance होता है. आदमियों में feminine जब ड्राइवर बन जाता है तब imbalance होता है. how do you know that this is imbalanced? when women के, we are talking about only women here right now, okay, because magical vortex is only for women. So when do you know that your energies are imbalanced? When you become too dominating, or when you operate too much on logic. आप लॉजिक ज्यादा लगाते हैं, हर चीज में लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. यू लूजिंग टच विथ योर क्रिएटिविटी. यू ऑलवेज इन द हाउस यू आर टेकिंग ऑल द डिसीजन टू कैसे चलाना है, कैसे करना है, बाहर का कैसे देखना है, अंदर का कैसे देखना है, वो आप ज्यादा कर रहे हैं. ठीक है. एंड विच इज एग्जॉस्टिंग यू. ठीक है, उसके वजह से आपको एग्जॉशन आता है. व्हेन यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस योर इमोशन, व्हेन यू फील शेमफुल इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, व्हेन यू हाइड इट. ओके, बिकॉज मस्कुलिन डू दैट ना.
because for men it is being strong, it is being, being a leader. These are the qualities of masculine, and when you operate on that, there's an imbalance that is happening, because your driving force was always feminine. And feminine को क्या चाहिए होता है? Feminine is always nurturing. Nurturing मतलब care करती है. Feminine is always creativity, because creation comes from feminine. Feminine create करता है, ठीक है? Because you carry a child. Masculine, a man doesn't. Okay, so creativity, intuitive, very good with the intuition. Okay, but we are losing touch with your intuition when you operate on masculine. ठीक है, सब चीज दिमाग से हो रही है, इंट्यूशन से नहीं हो रही है. Intuition comes from your gut. Okay, so you're not operating with your intuition, you're not putting trust on your intuition, you are doubting your own self. Okay, ये feminine qualities होती है. तो आप देख के बताइए कि आप अपनी लाइफ में किस पे ऑपरेट कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इनटू मस्कुलिन, और आर यू ऑन द रिसीविंग? बिकॉज फेमिनिन ऑलवेज ओपन टू रिसीव, is always loving, always caring, always nurturing, and always surrendering. It knows, it has a belief in, she has a belief in herself ki I am made to be loved. It is safe for me to love. It is safe for me to express. I will always be loved. I will always be taken care of. I am the queen. Okay. और लेकिन अगर आप ये हो रहा है कि सब काम मुझे ही करना पड़ता है, हर डिसीजन मैं ही ले रही हूँ, हर जगह आप ही गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंगर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज़ यू आर नॉट ऑपरेटिंग इन योर फेमिनिन, यू आर ऑपरेटिंग ऑन योर मस्कुलिन, यू आर वे अहेड टेकिंग डिसीजंस, वे अहेड टेकिंग स्टेप्स वेयर आपको लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ समवेयर यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर मस्कुलिन पार्टनर्स आल्सो. ओके, दूसरा तालमेल में गड़बड़ तब हो जाती है व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ मस्कुलिन, योर हस्बैंड इज ऑपरेटिंग ऑन फेमिनिन. ओके, वहां पर भी तालमेल में गड़बड़ हो जाती है, दो गाड़ी चल जाती है बिकॉज मस्कुलिन और फेमिनिन अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, साथ में रहेंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी बिकॉज दिस इज नॉट द ओरिजिनल एनर्जी दैट दे नीड टू ऑपरेट ऑन. ओके, जिसका काम उसी को साजे तो वो उसके पास आ जाए तो ठीक रहता है. ओके, बिकॉज मस्कुलिन ऑल मस्क एंड, और ज्यादा इम्बैलेंस में दिक्कत आ जाती है जब योर हस्बैंड इज ऑल्सो मस्कुलिन एंड यू आर ऑल्सो मस्कुलिन. Okay, your partner is also masculine and you are also operating on the masculine energy. Then if both of you want to take decisions, both of you want to do, both of you want to provide, both of you want to be seen, but you can't, because then there is a struggle. Then there's a tension between both of you. Also, the problem increases when both of you operating on the feminine energy. So both of you don't want to do anything. Both of you want to receive. Both of you want to, want to leisure. But both of you want to be taken care of. Both of you want to be pampered. So, but then who takes the initiative? Because both are operating on the feminine energy. So that is why they need to be, to have that balance and to have that harmony in any relationship. You need to have balance of masculine and feminine. Okay, this was a short introduction on what masculine energy is and what feminine energy is. But today we are talking about the feminine embodiment, the goddess of feminine, feminine power, the feminine energy, the manifestation of feminine energy on earth is Radha. Okay, so when you see Radha, Radha is expression of that feminine energy. तो वो सोर्स है. तो आप जब उनको देखते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि ये रिफ्लेक्ट करना है आपको आपकी लाइफ में. नॉट गोइंग ऑन लॉजिक, ये तो हो ही नहीं सकता. वी ओनली गिव गिव एंड वी डोंट गेट, दैट अगेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन लॉजिक. आप करके देखिए, यू स्टार्ट including the things that you have written, what is Radha to you. So being kind to your own self, being kind to others, being kind to your child, being kind to your husband, understanding their trauma, understanding they are being human, and not taking everything personally. And when you don't take everything personally, but is not, everything is not about you. Sometimes things are about them also, their struggles, their traumas, their triggers, but we make it our own self. तब दिक्कत आने लगती है. Okay, so try to include those qualities which you have written. So I want you to write it in the chat box. What are the qualities that you have written of? I want to see whether the qualities the traits that you have written, what is Radha for you, are they matching with the feminine side that is goddess Radha? Okay, and it's beautiful. आप एक the lady, women can actually manifest everything because वो बनी ही इसी के लिए, receive करने के लिए. Everything that she wants to desire,
बोलते हैं कि मेल को भी क्रिएट इसलिए किया गया है टू सर्व फीमेल, द फर्स्ट द फीमेल वाज क्रिएटेड एंड देन मेल वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड टू हर, टू टेक केयर ऑफ हर, to love her, to nurture her, and to give her everything that she needs. Okay, so you just have to desire, and the desire will become your reality when you operate on the feminine energy and when you know that you deserve. Okay, logic me. This is what feminine. This is just a tip of iceberg that I've touched. Okay, in the meditations that we will do, we will be taking more on it. Okay, so if you really want to join, please do join that. You can register by messaging me. Okay, so let's do a small intuitive kind of, to celebrate Radha today and to celebrate the Radha inside you. Let's do a small meditation to harness this energy, this power, the cosmic, जो energies है राधा की, let's try to, bring it in our life today, call it in our life today. So how do we do that? Just by closing your eyes and just sitting in a place which is, comfortable. I'll give you one, I'll just share my own example. Today, when I woke up, I woke up with a very good energies, but I forgot that, today is Radha Ashtami. कल रात तक मुझे याद था, आज सुबह मैं भूल गई थी, एकदम से फिर मुझे याद आया, and that, the urge, the feminine urge, took over whole my body, and I thought, no, I need to, dress up today, and I need to, I feel so good about me today, and, celebrate the women in me, celebrate the love that is coming out of me. And then I, wore sari and I dressed up, and there was nobody. I did not go out, or I, did not meet anybody, or, there was nobody who was there to see me, or, nothing. It was for me. And, when I got dressed up, and, when I did my, when I dressed my Laddu Gopal, and when I got ready, and then I, did my bhajan and then did my chant, the energy was shifted, the energy shifted, and there was just a lot of tears which started rolling, matlab aansu pe aansu and aansu, and that I could feel the connection with on my own self, because the divine is, the source is within you only. And when you get connected to that, then naturally your emotions come out, and it was so beautiful. I this वो माहौल ही अलग था, वो different energy थी, the aura was different, the energy was different, I was vibrating on a different, the beauty was different. So when you operate from the feminine side, you glow, your happiness is shown on your face, and you just are in the different world. So that is the essence that I want you to have in your life, and taste that, essence and nectar, and then you will understand कि आप क्या मिस कर रहे थे, you know. आपको अगर धरती पे जन्म औरत की योनि में हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है कि आप रहिए ना क्वीन की तरह, कोशिश तो करिए, ठीक है? और फिर वो कोशिश एक बार करनी पड़ेगी, उसके बाद वो कोशिश नहीं होगी, दैट विल बी नेचुरल फ्लो ऑफ योर लाइफ. So because I trust myself, that it is safe for me to be myself, it is safe for me to be a woman, it is safe for me to nurture my feminine side. So I get people who are masculine and who provide for me, okay, who take care of me. You will also get that, okay? That's it. Let's close your eyes, sit in a comfortable position, and take a deep breath. Okay, let's start. Take slow, deep breath to the center of your body, wherever you feel the center is. लंबी सांस लेंगे and exhale. Inhale and exhale. Radha, I want you to visualize the energy of Radha in front of you, around you, and inside you. How do you do that? By taking deep breath to your heart. लंबी सांस अपने हार्ट तक लेंगे और छोड़ेंगे. You breathe in to your heart. Heart is a chakra of love,
Try to slowly open your heart with every breath that you are taking. You can feel your heart slowly and slowly opening to the divine light. Keep breathing and let the light go inside your heart. The light from the source is coming to you and filling your heart and slowly opening your heart like a lotus. The pink energy is healing your heart and filling your heart and opening your heart. Keep breathing to your heart. Just focus on your breath and just follow your breath to your heart. If there is any thought which is coming, just let it go. Bring your focus back to your breath and to your heart. Slowly, gently put your hand on your heart and keep breathing. Feel the rhythm of your breath. Feel how your heart is expanding and contracting. Tell yourself in your heart, repeat, I am the love. I am the light. I am the expression of the source energy. I am the expression of the source energy. Keep breathing. I am the love. I am the light. It is safe for me to love. It is safe for me to be loved. It is safe for me to be kind. It is safe for me to express myself. Keep breathing to your heart. Let all these affirmations fill your heart. Let yourself find that safety in your heart. Again, repeat. It is safe for me to love because I am the love. I am the light. I am the source. I love to be pampered. I love to be taken care of. All my relationships are beautiful. All my relationships are nurturing. Everyone who comes in my life gets the love from me. It is safe for me to be loved. It is safe for me to love.
I am kind. I am gentle. And now feel this energy flowing inside your body, in every cell of your body, expanding from your heart to every vein and cell of your body. Feel the energy of love traveling to throughout your body and filling your body with the love and light. Say the word Radha, 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 and feel the energy. Thank the goddess Radha. Thank you, thank you, thank you. Feel the gratitude for this feminine goddess. Take a deep breath. Just spend some time with this energy inside. Breathing in, breathing out, filling yourself with gratitude and love. And when you are ready, you can slowly, gently bring your awareness back to here and now and can open your eyes. Take your time. Radhe Radhe. Okay, if you're back from your meditation, just write it in the chat box. How was your experience? What did you learn from this session today? What are your takeaways from the session today? Okay. If you don't want to write it here, you can send it to me in the writing. That would be very good. Okay. Okay. Let me just, stop the recording.